Namaskar, welcome everyone. Happy morning to all of you. Good to have you all here. So, today's session in sadhana will be again knowing about sound healing and Rudra, being in receiving, Rudra chanting, and sound healing. Think of your sankalp, your desire, your vision. आपके संकल्प के साथ रहिए as if it's manifested. Be in gratitude. Feel the joy and happiness. Now open your eyes and hand it over to the mighty majestic Rudra. इस सेशन में आपको इसे पकड़ कर नहीं रखना है, just hand it over to Rudra. आज की साउंड हीलिंग में हम 852 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे. अगेन इट्स अ सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसी and it helps us to return to spiritual order. And 1122 hertz जो solfeggio की master frequency, out of the 10 this is the master frequency and powerful charged angel frequency. It helps us for self mastering and enlightening. So beyond these frequencies, adults don't enjoy the sound. The children do, but for adults this is the highest frequency which we enjoy and we can take. So आज के ये हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए हम आगे बढ़ेंगे. हमने अभी तक पावर ऑफ रुद्रा देखा है, पावर ऑफ साउंड हीलिंग. हम अभी पावर ऑफ टेस्टिमनी देखना चाहते हैं. सो वी विल लाइक टू हैव टेस्टिमनीज फ्रॉम यू and we'll see to it that we share with many people, and for our upcoming programs with different mantras, अलग अलग मंत्राओं के साथ हम साउंड हीलिंग करने का आगे प्लान कर रहे हैं. सो दैट विल हेल्प अस. ओके, लेट्स डू 3 ओम टू बिगिन विथ. 3 ओमकार से शुरू करेंगे. Stop this one, otherwise it goes on for about 15 minutes. Okay, so this helps us, this is B note, helps us to connect us to our divine, the Sahasra Chakra. अब रुद्रा के बारे में जानेंगे. Yes, निखिल जी. Namaskar everyone. Last few days we've seen about Rudra. Now today we'll just in a short, since it's the last day, we'll see the what are mantras and what is the power of mantras and how it all originated. So I would just like to you all to ponder on these sentences. A military parade never crosses a bridge. Window panes crack due to an explosion nearby. Even animals love soulful music. So these all have been witnessed by all of us. Secondly, there is a very interesting story of Thakur Pandit Omkar Nath, who had been to Russia, and during one of his interactions with Mussolini, when he was singing the Samaveda. Even Mussolini, who didn't know anything about Indian language or culture, he was in love with Samaveda and Thakur Pandit Omkar Nath. One of the important aspects of the sun rays which we see, sun rays, the x-rays, infrared, the ultraviolet, and finally the lasers. What is the difference? The difference is basically between the wavelength and the frequency. Like sun rays, when they fall on our body, they don't penetrate the skin, they stop at the skin. The x-rays further go inside, infrared go further inside, ultraviolet, and finally the lasers, which have the capability to penetrate our bones.
So similarly, even for the sound waves, the as we increase the wavelength, the frequency reduces, and as the wavelength is reduced, the frequency also increases. So we'll see this in the next slide. Um, Basically, a mantra activates a particular kind of energy in different parts of our body. It is proved that our various organs also have particular types of frequencies, and once the organ is out of sync of that particular frequency, that is the beginning of a particular disease. And in this, in form of the mantras or the sound healing, we try to get back we try and get back those organs to their original frequencies. That means we are curing the disease. Now fundamentally, there are three sounds in existence: a, u, and m. Now these three sounds can even be pronounced without, if even if we don't have a tongue. That's why it is called the fundamental sound. And Om is not some religion's trademark, but it is the fundamental sound of existence. In Shiva Mahapuran, it is also said that Shiva or Bhagwan Shankar can create a whole new existence just by uttering three Oms. As as you can see in the picture, 432 hertz is the universal frequency of Om. Okay, we'll see in the next slide. Now, have you all ever wondered that what is the basis of Sanskrit language? Now, just a small example I'll tell. One of our foreign leaders had gone to Russia, and while starting the speech, while reading out the speech, he was speaking in fantastic Russian, and everyone was highly impressed. And after the speech, when they were interacting, he said that he didn't understand a word of Russian, and the people were really surprised. They zapped कि कैसे आप फिर इतना बढ़िया Russian, how did you manage to speak such good Russian? He just showed his script, and in Devanagari script, he had written the Russian language. So there is no pronunciation which has been left out in Sanskrit. Now, another small example which we say, all mothers or parents, when a child wants to go for urination, we say that we take out a word and we say shh, and then the child is very easily uh, he's able to urinate. So, what is the basis of this? Why the word sh is used? That we are going to see. Isn't it interesting? In Sanskrit, there are 50 which is called as mulaksharas. And what is the basis of mulaksharas? In English, there are 26 alphabets, but in Sanskrit, there are 50 mulaksharas. And the distribution is 13 swar, 13 swar, 33 vyanjan, 33 vyanjan, and 4 ayogavah. So the total becomes 50. When our Rishimunis used to be in meditation, they realized that in Muladhara Chakra, there are 4, Swadhishtan 6, Manipur 10, Anahat 12, Vishuddha 16, and Ajna there are 2 petals, or uh, the Bija mantra, the Bijakshar, and the supporting aksharas. So the total which happens, it is 50. Now we'll move to the next slide. So this in this la which we can see, it is the bijakshar of the Muladhar mantra. And what are the 4 other aksharas? It is sa, va, sha, and sha. So that's what forms the basis of each and every nerve center, or which we call as the chakras. Or this is the example of Muladhar chakra. And every chakra, as we go higher towards the Sahasrar, has a particular type of akshar. And these akshars, or these designs of whatever the petals are there, how many petals are there, what is the basic bijakshar of each chakra, was seen by our great rishis in
their deep sadhanas. They used to draw it, and then they used to correspond it. And once they used to say it aloud, and then they used to test it whether the petals are reverberating or vibrating while they are pronouncing a particular type of word. And after doing this deep exercise, the 50 Varnaksharas were born. So that is the basis of Sanskrit language. That is how scientific our language has been. Next slide, please. So you must have heard We'll go to lum, next. bum. Yeah, Yeah, I was just adding yeah, up. absolutely, absolutely. Yeah. So these are Yeah, yeah. nothing These but are the we basic. activate our chakras using these sounds lum, vum, rum, yum, hum, and om. Yeah, I'll go to the next slide. Yeah. So the mantras, basically, they have the Sanskrit basis, and that is the scientific nature of them and the basic aspects of Sanskrit language, which is called the Nada Yoga or the Nada Brahma, which is the science of using them in a particular way or in a particular, we call it as aghat, or we raise our voice or we get it down, so that everything has a, it is based on science of frequency, wavelength, pitch, and the power of penetration. We can create powerful forms while reciting various mantras by uttering sounds in certain particular arrangements. A famous example I can give in a small town is there near Mahabaleshwar. So in the history, it is known that while learning Vedas, what used to be the final exam? An earthen pot used to be hung, and the student who is able to crack that pot just by recitation of Veda mantras, he is the Veda. So what we are discussing here, that we can create powerful forms just by recitation or by uttering the mantras in a particular manner, we can reach that level. So sound is more important than the meaning. So all through last 10 days, we have been discussing that the translation that we learned what is chamak, what is namak, what is the meaning of chamak. That was the direct translation. But however, once you go in deeper levels of meditation, when you go into the realizations, and then when you realize the real meaning of those mantras, that is the essence of that. So learning and discussing all these things, will move on for today's Namasmaran. We go for today's Rudra chant. Yeah, It is the I'll same. just add one more line. Do you Yeah, know which is yeah, the best sound instrument on the earth? Do you know which is the best sound instrument? You can put it in the chat box if you know. I think everybody's set to go ahead with Namsmaran. So the best sound instrument is our vocal cord. Yeah. So let's go ahead now for Namasmaran. Yeah, Nikhil. just sit in, yeah, yeah. Everyone just sit in Padmasan or Charasan, and or Sukhasan, hands in Dhyana Mudra, gently placed on your thighs, eyes closed, spine erect, and just be in reception of the Rudra. अथ रुद्राध्यायः अस्य श्रीरुद्रस्य प्रश्नस्य अनुष्ठुप् छन्दः अघोर ऋषिः सङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स एष रुद्रो देवता अग्निः ऋतुचरमायामिष्टिकायागो शतरुद्रजपे विनियोगः सकलसरुद्राध्यायस्य श्रीरुद्रो देवता एका गायत्री छन्दः तिस्रोऽनुष्टुभस्तिस्रः पङ्क्तयः सप्तानुष्टुभो द्वे जगत्यौ परमेष्ठी ऋषिः अग्ना विष्णु सजोषस्येत्येकादशानाम् अनुवाकानाम् अग्निः काण्ड ऋषिः आद्या गायत्री आग्ना वैष्णवी शिष्टै यजुः वाजादयोन्नादिविशेषा देवता महाविराट् छन्दः ॐ नमः शम्भवेति बीजं मयो भुवेति शक्तिः नमः शङ्करायेति बीजं
मयस्करायेति शक्तिः शिवायेति बीजं शिवतरायेति शक्तिः योऽङ्कारो बीजं मायाशक्तिः ब्रह्मा बीजं सुषुम्ना शक्तिः नमः ईशकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्य इति कीलकं श्रीभवानी शङ्करप्रीत्यर्थे जपे वा विनियोगः। हरि ओम इडा देवहुर्मनुर्यज्ञनिर्बृहस्पतिरुक्था मदानि शगसि विश्वे देवा सूक्तवाचः पृथ्वी मातरमामाहि गसीर् मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीन् देवेभ्यो वाचमुद्यासगशुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तम्मा देवावन्तु शोभायै पितरो नुवदन्तु नमो रुद्रेभ्यः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यवौतो तैषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। या तैष शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्या या तव तया नो रुद्रमृडया या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गोसीः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगत् यक्ष्मगसुमना असत् अद्य वोचरिति वक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक अहि अस्य सर्वान् जम्भयन् सर्वा आश्चर्यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुणो उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चैमागरुद्रा अभितो दीक्षश्रिता सहस्रशो वैशागहेड ईमहे असौ यो वसर्पतिनीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्जन्मनस्तो भयोरार्त्न्योर्जां यास्यते हस्तैषवः पराता भगवो वपा अवतत्वधनुस्त्वगसहस्राक्षशते शुधे निशीरशल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भवा विज्जन्धनुः कपरदिनो विशल्यो बाणवाग उत अनेशन्यस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिरमीढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्तुमयक्ष्मया परिम्बुजा नमस्ते अस्त्वायुधायानातताय घृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो यशिधिस्तवारे अस्मिन् निधेहितम्। अथ द्वितीयाध्यायः। नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायो पवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृष्णवीताय धावते सत्वनां पतये नमः। अथ तृतीयः। नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिणे श्रीमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमो नमो निचैरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः सृकाविद्भ्यो जिघागो सद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तं चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमो उष्णीषणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमैष्मद्भ्यो धन्वाविद्भ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिरधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृच्छद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः सुपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः। अथ चतुर्थः।
नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्तृगहतीभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्गृहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः शकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगेभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः। अथ पंचमः। नमो भवाय च रुद्राय च शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च स्थितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय च शुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे च जिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च। अथ षष्ठः। नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जघन्याय च बुध्न्याय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमो उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय च शुरथाय च नमः शूराय च वभिन्धते च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमो बिल्मिने च कवचने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च। अथ सप्तमः। नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो कृष्णवे च प्रमुषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे च शुधिमते च नमः तीक्ष्णे शवे च युधने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्षाय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईध्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च। अथ अष्टमः। नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः तीर्थाय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः शश्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च। अथ नवमः। नमैरिण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगचलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः स्थल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गौवरेष्ठाय च नमो हृदय्याय च नमेष्प्याय च नमः पाकसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्काय च हरित्याय च नमो लोप्याय च औलप्याय च नमो ऊर्म्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णसद्याय च नमो पगुर्माणाय च भिघ्नते च नमः आखिरते च प्रखिरते च नमो वः किरिकेभ्यो देवानागहृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विजृमत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमीवत्केभ्यः। अथ दशमः। द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रिन्नीललोहिता येषां पुरुषाणां मेषां पशूनां मा भेर्मारोमो येषां किञ्चनामत याते रुद्रशिवातनु शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागरुद्राय तवसे कपर्दिने क्षेद्वीराय प्रभरामहे मतिं यथा न शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं मृणानो रुद्रोतनो मयस्कृधि क्षेद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोश्य मुनुरायजे पिता तदिश्यामतौ रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो वधिः पितरं मोतमातरं प्रियामानस्तनुमो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुष्मानो गोषुमानो अश्वेषुरीरिषः वीरान् मानो रुद्रभामितो वधीरविष्पन्तो नमसा विधेमते आराक्ते गोग्नौ तो पूरुषग्ने क्षेद्वीराय सुं नमस्मेते अस्तु रक्षाचनो अधिजतेव ब्रूयधा च शर्म यच्छद्बर्हाः स्तुश्रुतं गर्तसनं युवानं मृगं न भीमपन्तमुग्रं मृडाजरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मिन्न्यपन्तु सेना आह परिणो रुद्रस्य हेतिर्वणक्तपरित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः
अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्मीढवस्तौकाय तनयाय मृडया मीढुष्टमशवतवश्यो नः सुमना भवा परमे वृक्षायुधं निधाय कृत्तिन्वसान आचर पिनाकं बिभृदागहि विकृत विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगो हेतयोन्नमस्मन्योपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृति। अथ एकादशः। सहस्राणि सहस्रशो यरुद्रा अधिभूम्यां तेषागो सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्तरणमन्त्रीक्षे भवादि नीलग्रीवासिकण्ठा शर्वादाक्षमाचराः नीलग्रीवासिकण्ठा दिवगो रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षे सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विद्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पथिरक्षय ऐलब्रुदा यौविदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः ये एतावन्तश्च भूयागो सश्चरिशो रुद्रा वितस्त्रे तेषागो सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यायन्तरिक्षै ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृणयन्तु तेयं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टितं वोजम्बे दधामि। ओम अग्ना विष्णु सजोषे सेमावर्धन्तु वाङ्गिरः द्युम्निर्वाजेभिरागतम्। अथ प्रथमः। वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे ऋतिश्च मे सुरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे प्राणश्च मे अपानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तञ्च मादितञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च मे ओजश्च मे सहश्च मे आयुश्च मे जरा च मे आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अङ्गानि च मे स्थानि च मे परुगोषि च मे शरीराणि च मे। अथ द्वितीयः। ज्यैष्ठ्यञ्च मे आधिपत्यञ्च मे मन्यश्च मे भामश्च मे मश्च मे म्हश्च मे जयमा च मे महिमा च मे औरिमा च मे पृथिमा च मे वर्ष्मा च मे द्रागुह्या च मे वृद्धञ्च मे वृद्धिश्च मे सत्यञ्च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनञ्च मे वशश्च मे तुषश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातञ्च मे जनिष्यमाणञ्च मे सूक्तञ्च मे सुकृतञ्च मे वित्तञ्च मे वेद्यञ्च मे भूतञ्च मे भविष्यच्च मे सुगञ्च मे सुभतञ्च मे रुद्धञ्च मे रुद्धिश्च मे क्लुप्तञ्च मे क्लुप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे। अथ तृतीयः। शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे सौमिच्च मे न्यात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरञ्च मे लयश्च मृतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे अभयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सूषा च मे सुदिनञ्च मे। अथ चतुर्थः। ऊर्क्च मे सुनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधुच मे सग्धिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रञ्च मे उद्भिद्यञ्च मे रायिश्च मे रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुच मे प्रभुच मे बहुच मे भुवश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे क्षितिश्च मे कुयवाश्च मे नञ्च मे क्षुच्च मे व्रिहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मुसराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे णवश्च मे आमाकाश्च मे नीवाराश्च मे। अथ पञ्चमः। अश्माच मे मृत्तिका च मे गरेश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे सीसञ्च मे तपुश्च मे शामञ्च मे लोहञ्च मे अग्निश्च वापश्च मे विरुधश्च मे औषधश्च मे कृष्टपच्चञ्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पतां वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे वसुच मे वसुतिश्च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे रथश्च मे यमश्च मे दिश्च मे गतिश्च मे। अथ षष्ठः। अग्निश्चमेन्द्रश्च मे सोमश्चन्द्रश्च मे सविता च इन्द्रश्च मे सरस्वती च इन्द्रश्च मे पूषा च इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च इन्द्रश्च मे मित्रश्च इन्द्रश्च मे वरुणश्च इन्द्रश्च मे त्वष्टा च इन्द्रश्च मे धाता च इन्द्रश्च मे विष्णश्च इन्द्रश्वनेश्वनौ च इन्द्रश्च मे मरुतश्च इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च इन्द्रश्च मे द्यौश्च इन्द्रश्च मे दिशश्च इन्द्रश्च मे मूर्धा च इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च इन्द्रश्च मे। अथ सप्तमः।
अगशुष्मे रश्मिश्मे मेधाभ्यश्मेधिपतिश्म उपागशश्मे अन्तर्यामश्म इन्द्रवायवश्मे मैत्रावरणश्म आश्विनश्मे प्रतिप्रस्थानश्मे शुक्रश्मे मन्थीचम आग्रणेश्मे वैश्वदेवश्मे ध्रुवश्मे वैश्वानरश्म ऋतुग्रहाश्मे इति ग्राह्याश्म इन्द्राग्नश्मे वैश्वदेवश्मे मरुत्वतीयाश्मे माहेन्द्रश्म आदित्यश्मे सावित्रश्मे सारस्वतश्मे पौष्णश्मे पात्न्योतश्मे हार्योजनश्मे। अथ अष्टमः। इदमश्मे बर्हिश्मे वेदिश्मे धिषण्याश्मे सृजश्मे चमसाश्मे ग्रावाणश्मे स्वरवश्म उपरवाश्मे धिषवणिश्मे द्रोणकलशश्मे वायव्यानिश्मे पूतभृच्चम आधवनीयश्चम आग्निधरञ्चमे हविर्धानञ्चमे गृहाश्मे सदश्मे पुरोडाशा अश्मे पचताश्मे वभृतश्मे स्वगाकारश्मे। अथ नवमः। अग्निश्चमे घरमश्मे अर्कश्मे सुरश्मे प्राणश्मे अश्वमे हृश्मे पृथिवीचमे ऋतिश्मे दश्मे शक्वरीरङ्गुलयो दिशश्मे यज्ञेन कल्पतां मृक्षमे सामचमे सोमश्मे जिक्ष्मे यजुष्मे दीक्षाचमे तपश्चमे ऋतुश्मे वतञ्चमे होरात्र्योर्वृष्ट्या बृहत्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम्। अथ दशमः। गर्भाश्चमे वत्साश्चमे त्रविश्चमे त्रविचमे दित्यवाट्चमे दित्यौहिचमे पञ्चाविश्चमे पञ्चावीचमे त्रिवत्सश्चमे त्रिवत्साचमे तुर्यवाट्चमे तुर्यौहिचमे पष्ठवाच्चमे पष्ठौहिचम उक्षाचमे वशाचमे वृषभश्चमे वेहच्चमे नडवाञ्चमे धेनुश्चम आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पतां व्यानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पता श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाग् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्। अथ एकादशः। एकाचमे तिस्रश्चमे पञ्चचमे सप्तचमे नवचमे एकादशचमे त्रयोदशचमे पञ्चदशचमे सप्तदशचमे नवदशचमे एकविंशतिश्चमे त्रयोविंशतिश्चमे पञ्चविंशतिश्चमे सप्तविंशतिश्चमे नवविंशतिश्चमे एकत्रिंशच्चमे त्रयस्त्रिंशच्चमे चतुस्रश्चमे अष्टौचमे द्वादशचमे षोडशचमे विंशतिश्चमे चतुर्विंशतिश्चमे अष्टाविंशतिश्चमे द्वात्रिंशच्चमे षट्त्रिंशच्चमे चत्वारिंशच्चमे चतुश्चत्वारिंशच्चमे अष्टाचत्वारिंशच्चमे वाजश्च प्रसवश्च पजिश्च ऋतुश्च स्वश्च मूर्धा च व्यश्न्यश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च। हरि ओम इडा देवहुर्मनुर्यज्ञनीर्बृहस्पतिरुक्था मदानि शगसिषत् विश्वे देवा सूक्तवाचः पृथ्वी मातरमामाहिगसीर् मधुवनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीन् देवेभ्यो वाचमुद्यासकशुश्रूषेण्याम् मनुष्येभ्यस्तं मा देवावन्तु शोभायै पितरो नुमनन्तु नमो रुद्रेभ्यः। ओम शांति शांति शांति। स्लोली अब आप शवासन में जा सकते हैं। यू कैन जेंटली lie down in Savasana for the sound healing. Take a deep breath inside. As you gently release the breath, be in forgiveness. Forgive yourself. Forgive your past. Forgive everyone around you. Take one more deep breath inside. As you gently release the breath, pour gratitude in your life. Gratitude to everyone and everything around you. Take one more deep breath inside. As you gently release the breath, stay in surrenderfulness. Mentally pour down to the gods of sound
the vibhutis of Nad. And stay connected to the pure sounds. Now the divine energies are taking the journey ahead.
Slowly and gently, we are coming back to our awareness. Very, very gently. Now you can move your fingers a little. You can bend your leg at your knees. Turn to the right side of your body. And bring your knees as close as possible to your heart, just like a divine child in the womb of Mother Earth. Mentally, we thank all the divine energies for being present here. Give your gratitude. Feel the unconditional love. You're safe, secured, and unconditionally loved. In the womb of Mother Earth, see yourself just the way you aspire and desire to be. See your health, wealth, and relationships just the way you aspire to be. See yourself complete. Slowly and gently, you can rise up and sit. Very, very gently, rise up and sit. Keeping your head downwards, you may open your eyes once, close it again, and as you feel complete and comfortable, you can now open your eyes. So gratitude for this life, for this beautiful journey. जब हम कृतज्ञ भाव में रहेंगे तो we are able to manifest all that we desire. Yes, Dr. Narendra C, I can see your video on. You can share. We are blessed to have you here. You can unmute. Yeah. हाँ, जय गुरुदेव। कल फर्स्ट टाइम में मैंने ये किया था, आपका सेशन अटेंड किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत यूनिक एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपने किया है। और जो कंटेंट है, जैसा निखिल जी ने आज बताया है संस्कृत के बारे में, अक्षर व्यंजनों के बारे में, तो ये हर एक को जानना चाहिए। सबको पता तो रहता ही है, लेकिन समझना चाहिए। पता रहना एक बात अलग है, समझना है, समझने के बाद फिर इम्प्लीमेंट हो सकता है। और वो जिसको भी जरूरत है उसको उसके लिए वो क्या एडवाइस कर सकते हैं। तो कल से अभी कल किया, आज किया, 2 दिन किया, तो मुझे लगा कि ये तो हर एक की जरूरत है। अगर आपको मन को शक्ति मिलेगी तो ही आप अच्छा काम कर पाओगे। और ये आपका समय भी जो है वो सबसे अच्छा समय है। ये आप किसी के लिए नहीं, आपका समय है और आप पूरी तरह से 100% यहाँ पर दे सकते हो। तो ये अच्छा है और सभी क्लास के लिए अच्छा है। जिसको भी स्ट्रेस है उसके लिए अच्छा है। जिसका माइंड एकदम फ्रेश है, कुछ काम करना है, आज क्या करना है, वो सब प्लानिंग करने के लिए भी इससे शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है। और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए तो ये थेरेपी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे सीनियर हो जाते हैं तो उनका माइंड कंट्रोल, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम डाउन हो जाता है और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा असर जो है वो माइंड पे करती है। स्किन पे सबसे लास्ट, मन पे पहले करती है, शरीर पे बाद में करती है। तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और ये सेशंस
के जो जितने जैसे जैसे जब तक एक्सपर्ट बनते जाएंगे तो उसका एप्लीकेशन हर एक समाज में हर एक तक पहुंचेगा। कोई अपने घर में पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कर सकता है, डॉक्टर्स अगर करते हैं, या फिर पेशेंट के लिए कुछ सुविधा करके, कुछ प्लानिंग करके वो कर सकते हैं। जैसे इसका रिजल्ट आ जाएगा ना, मेडिकल रिजल्ट्स आ जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर, कोई पेशेंट रिकवरी में है, ऑपरेशन हुआ है, सीरियस ऑपरेशन हुआ है, रिकवरी में है, तो उसको अगर 8-10 दिन का कुछ पैकेज देते हैं, तो उसके बाद उसका फीडबैक, उसका मेडिसिनल रिपोर्ट, ये सब को लिखते हुए एक अच्छा रिसर्च हो जाएगा। और पुराना फाइंडिंग तो ये हम कुछ नया तो नहीं कर रहे थे, सिर्फ नए स्टाइल में कर रहे हैं। आज की जरूरत जैसी है वैसे उस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। तो ये दुनिया को सबको पता होना चाहिए, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो हम सब लोग उसको प्रयास करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट होने चाहिए। किसी थैंक एक यू, के ऊपर थैंक डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हर एक जगह पे एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी डिमांड है। और यहाँ पर एक्सपर्ट्स कम है, तो एक्सपर्ट्स हम बढ़ाएंगे, बस वही कोशिश है। तो ये बेसिक, आपका जो बेसिक कोर्स है, इसके साथ आगे मैं तो ऐसे आपको बताऊंगा कि आपने एक टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स भी लेना चाहिए इसमें, अगर किसी को टीचर बनाना है, क्योंकि पूरा नॉलेज लेके जाना है। ऐसे तो कोई आधा अधूरा नॉलेज लेके टीचर नहीं बन सकता है, बनना नहीं चाहिए। पूरा लेके आप अवार्ड करोगे और डिक्लेयर करोगे अभी, हाँ अभी आप क्लासेस कंडक्ट कर सकते हो, हीलिंग कर सकते हो, तभी हीलिंग करना है। सर। तो दैट वी आर डूइंग, हम वो कर रहे हैं, वी आर ट्रेनिंग और ही। ये, हाँ ये कोई रिलीजियस नहीं है, कोई रिलीजन से भी नहीं है, तो उसमें भी हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। हर एक के अपने अपने मंत्र है, स्तुति है, स्तोत्र है, सूक्त है, तो अपने अपने स्टाइल में, जैसे ये प्रेयर प्रेयर कोई भी प्रेयर से भी ये कनेक्ट कर सकते हैं, वो प्रेयर से कनेक्ट करके ये कर सकते हैं। सिर्फ आपको अभी थोड़ा सा रिसर्च करके प्रूव करना है कि इसमें रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, और किस चीज पे कैसा, मिस माइंड पे, फिजिकल हेल्थ पे, और जो इलनेस रिकवरी में कहाँ कहाँ पर इसमें फास्ट रिजल्ट आ रहे हैं और जरूरत है। और दूसरा कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं है, ये एक ही मेडिसिन है, और इसमें खर्चा भी नहीं है, नॉन नहीं, इन्वेसिव है, हम नॉन इन्वेसिव। जरूर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यस। जैसे आपने बताया था, विल फॉलो दैट पाथ, आई थिंक। और हम आपके भी शुक्रगुजार है, आप टाइम निकाल के इतना हम आए यहाँ पे ब्लेसिंग देने के लिए। आई थिंक पुरुषोत्तम जी भी कुछ कहना चाहते हैं। बिंदु जी, आप। Yeah, I've asked him to unmute. Thank you, Dr. Narendra, for wonderful sharing. हेलो। Yeah, Purushottam ji. Dr. जय Purushottam. गुरुदेव। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। और एक जैसे डॉक्टर नरेंद्र ने बोला, काफी मतलब सबके मन की बात बोल दिया ऐसा मुझे लग रहा है। और ये जो एक्सपीरियंस है लास्ट 11 डेज का, मतलब मोस्ट ऑफ दी जो जो लोग भी ज्वाइन हुए हैं वो सभी मेडिटेशन और इनर वर्ल्ड के जर्नी करने वाले लोग हैं, ऐसा मैं समझता हूँ, मोस्ट ऑफ देम। और तो ये आपने एक अलग डायमेंशन हमको सबको दिया है, जैसे मेडिटेट करने का, जो SSY के थ्रू बोलो या डिवाइल, इसके थ्रू जो एनर्जी गेन करने का तरीका है। बाद में एक साउंड हीलिंग, एक बहुत मैं पर्सनली मेरी बात करूंगा तो मेरे लाइफ में एक नया चैप्टर ऐड होगा ये। और उसके साथ एक रुद्रा चैंटिंग, रुद्रा मेरे फ्रेंड बहुत कई सालों से कर रहे हैं, मैं उनके यहाँ जा रहा हूँ, सुन रहा हूँ, लेकिन विथ अंडरस्टैंडिंग जब करते ना तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये हर बार निखिल जी ने जो ब्रीफिंग किया और उसके बाद उसके एडवांटेजेस बताए, तो ऐसा लगा कि बहुत कुछ लाइफ में ऐड हो गया, एनर्जी वाइज, नॉलेज वाइज, और थोड़ा सा विजन भी एक्सपांड हो गया। तो ये मतलब जो इनर वर्ल्ड का जर्नी करने के लिए आपने बहुत सारे टूल्स और बहुत सारे रास्ते दे दिए। तो और ऐसे भी नहीं है, बहुत इफेक्टिव, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, हमारी जो ये है, उनको पता है, उसके बारे में पता है, लेकिन ऐसे हैप्पीजेड वे में पता है। ये साइंटिफिक वे में उसको अप्रोच करके खुद एक्सपीरियंस करना, ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत कम समय में और एफर्टलेसली आपने सब दिया है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Purushottam ji. Officially, we'll complete the session, but if anybody wants to say back,
आपको शेयर करना है तो आप रुक सकते हैं. 7:15 we officially complete. Whoever wants to stay back, ask anything, share anything, you can. I just wanted to show that we have this, what I said about high frequency. So we have higher frequencies. This is good for space or for children, they enjoy. So today you must have experienced little higher frequencies. So I hope you all enjoyed. We had a wonderful journey for this 11 days and we are very, very grateful because of every one of you present here that we could conduct this group sadhana और इसी निमित्त से हमारी साधना हुई. So I am very, very grateful to everyone and to Nikhil ji and all of us to create this. Thank you so very much. Our upcoming programs will announce soon in the group. Yeah. Thank you everyone. I read some messages. Roshni ji, yes, Dr. Roshni is also here. Thank you, Dr. Roshni. Kapil ji, Zarna, this journey of 11 days was immense. It's not over here. It's a new beginning for me. Yes, for us too, Zarna. The experience each day was unique. Same here. Thank you very much. Anushri, yes, thank you for doing this. Thank you, Anushri, for being a part. Thank you, Dr. Rita. Thank you, Gayatri. There are two Gayatris, I think Gayatri Ji and Gayatri, both are there. Ritika, Deepa Matki Ji, Roshni. Yeah, Dr. Narendra, thank you very much. Thank you very much to your wife and to you for attending this session. Thank you, Nikhil Ji. Thank you, everyone. We complete the session today. If you have kept any prasad, you may share with all and enjoy it. We'll also be sharing some of the videos today in the session. Jarna, you want to speak? Okay. So today we'll be sharing some beautiful things like how Vitthal, when you say how it helps to take care of so many stress and heart related things. So like that, some videos we'll be sharing and then we'll be completing this. We'll also send Friday invite in case you want to join on Friday sessions, then you can join that link. Yeah, once again, thank you everyone and thank you Nikhil ji. I complete the session here. Is that good? Thank you. Thank you.